and suddenly I heard that she had a dreadful accident. And what she had done was to spray her deodorant in her eye. I said, how can a deodorant move from where it's supposed to be used to the eye? But you know, too funny. And my what I was scolded, and that was my first scene. I think with Rekha aunty. लेकिन आपने ये किया कैसे? ये चमत्कार हुआ कैसे? पता नहीं. पता नहीं मतलब आप कर रही थी. ये ऐसे हो गया. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर. अगरचे अक्षय साहब के साथ जितनी की हैं उतनी नहीं की हैं, लेकिन कुछ बताइए हमको कि गोविंदा साहब के साथ इतनी फिल्में करना किस तरह का तजुर्बा रहा है. I've learned so much from him. I mean, वो इतनी energetic, मतलब he is something else. But the things that he told me, and he's one person who actually told me, to sit with me and he used to sit me down and say, तू एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी, तू number 1 बनेगी. You're a fan of Sridevi, you're a fan of Madhuri Dixit, you will reach there. एक और साहब हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे. हम लोग ने कितनी फिल्में की लोलो? हाँ, करीब 9-10 फिल्में की. आई थिंक द मैक्सिमम यू वर्क विद इज विद मी. और मालूम ही नहीं पड़ा कब शुरू करते हैं हम लोग फिल्म, कब ख़त्म कर देते हैं. और द परफॉर्मेंसेज व्हाट यू हैव डन इन माई फिल्म, आई फील नो एक्ट्रेस हैज़ डन. योर कंट्रीब्यूशन इज़ अमेजिंग. लोलो, यू नो यू आर द बेस्ट. एंड आई मिस यू एंड आई थिंक आई एम वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट फॉर यू नाउ. Something different. I think I must do a double role with you now. That's what you deserve. What say? धर्मेश दर्शन साहब. Thank you, Matavi. सर, वो मनीष साहब अभी आए थे 2 मिनट पहले. खूब सारी बातें कर रहे थे आपकी फिल्म राजा हिंदुस्तानी की, और कैसे आप लोगों ने मिलके जो है एक कम्प्लीटली नया, एक बिल्कुल ही अनोखा इमेज दिया करिश्मा को भी और आपकी फिल्म को भी, और ऐसे कई किस्से सुनाए. लेकिन हु कैन से इट बेटर देन यू? मेरे लिए बहुत अहम है मेरी हीरोइन. मैं ब्लेटेंटली बोलता हूँ कि मैं राज कपूर जी का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ. मैं राजा हिंदुस्तानी बना रहा था और मुझे मेम साहब कास्ट करनी थी. तो आमिर खान ने एक दिन मुझे बोला, यू नो धर्मेश, द काइंड ऑफ डेडिकेशन, द हंगर, द जुनून, द मैग्नेस, ऑल दैट विच यू आर सर्चिंग फॉर टू एलिवेट द सिंप्लिसिटी ऑफ योर फिल्म. देयर इज वन गर्ल, आई एम डूइंग अ फिल्म विद हर. शी इज नॉट कास्ट ऑपोजिट मी. ही वाज डूइंग अंदाज अपना, where she was with Salman and he was with Ravina. But she has that kind of madness, you know. And she would be right for your kind of. Amir should know he's famous for his kind of madness too. True, absolutely. And I said, oh, Karishma Kapoor. आपकी जो लेटेस्ट फिल्म है उसमें भी जो है वो आपको करिश्मा जी के बगैर तो कुछ, हाँ मैंने भी प्यार किया. बिल्कुल, मेरी नई फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया. अगर जरा इस तरफ देखें तो एक बहुत खूबसूरत सा नौजवान वो भी इस फिल्म से कुछ ताल्लुक रखता है. 2 नौजवान हैं, एक मेरे भाई है. हाँ, लेकिन वो उस किस्म का ताल्लुक उनको नहीं है. और एक मेरे खास फेवरेट बेस्ट बिहेव्ड एक्टर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री अक्षय कुमार है. आई जस्ट से वन थिंग कि व्हेन आई मेड राजा हिंदुस्तानी विद लोलो, शी वाज अ गर्ल विद ड्रीम्स इन हर आईज. And at हाँ मैंने प्यार किया, I'm so proud to say she's a woman of substance. मैंने जितनी फिल्में करिश्मा की देखी हैं, और सारी तो खैर नहीं देख पाया हूँ, 50 से ऊपर हैं, लेकिन मैंने जितनी फिल्में देखी हैं उसमें एक बहुत अहम मोड़ इनकी करियर का ये भी आया, जिसके बारे में बात करने से पहले हम इन साहब की बात ज़रा सुन लेते हैं. Hi Lolo, sorry I couldn't be there. Got this little accident, as you know. Well, I just want to take this little opportunity to thank you for every little thing you've done for me, and I don't think my own family, my own daughter could have done as much. Always love you, always will, and will always remember that I first met you at Salim Khan's house where you were wearing green and you looked, well, just like the daughter I'd never had. As you know, Fiza was written for you and you took peanuts or less than peanuts and you did the job. And of course, I can never forget that you played my real life mother, Zubaida. And so thanks, baby. And
I hope we can work together someday, but I'll have to write better roles than Fiza and Zubaida for you. Till that day, take care. Bye. फिजा करिश्मा आपकी बहुत अच्छी और बहुत यादगार फिल्मों में से हमेशा रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके बेशतर फैंस का भी यही मानना होगा। हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत अहम फिल्म मेकर जो इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, मैं उनको तशरीफ़ लाने की दावत देता हूँ। श्याम बेनेगल साहब। Hello, श्याम, हमने फिजा का एक सीन देखा जी। बहुत 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 खूबसूरत, और एक फ्लैश जुबैदा का भी देखा, जो कि खालिद बता रहे थे। आपने इस फिल्म में करिश्मा को कास्ट करने की कैसे सोची? Two reasons. One, of course, Khalid suggested that I look at Karishma. And it's very funny, you know, when I met her for the first time, I knew that she was going to be Zubaida. वो कैसे हुआ? And I hadn't seen a single film of hers. Not a single film. In fact, I'm ashamed to say that, but I think it was just as well because I didn't make up my mind about her before seeing her. You know, and that was the right way to do it, I think. You know, so the moment I saw her, I said, she is Zubaida in the film. You see, one of the things that I discovered about her is that you don't necessarily have to rehearse her a great deal. Not too many rehearsals. Because she will peak very quickly. You know, 1 or 2 rehearsals and then she's performance level immediately. And this is a remarkable quality about her. I think essentially because I think she is a great professional. She's also dreadfully accident prone, I must tell you. प्लीज बैठ जाइए, गिर विर जाएंगी तो मुझे लोग पीट देंगे। Exactly. We had this a particular day, and we were supposed to do a scene, badminton, in the film. And she was there in her room getting dressed, and suddenly I heard that she had a dreadful accident. And what she had done was to spray her deodorant in her eye. I said, how can a deodorant move from where it's supposed to be used to the eye? But you know, too funny. And what I was told it, and that was my first scene, I think, with Rekha aunty. लेकिन आपने ये किया कैसे? ये चमत्कार हुआ कैसे? पता नहीं, पता नहीं मतलब आप कर रही थी? ये ऐसे हो गया. I've never seen her rehearse. I've never seen her with her lines, which she must do at some stage, but I never saw her doing that, which she's doing quietly somewhere, but I've never seen her do that. She would just come there and she would say, what am I supposed to do? I remember the first day of shooting, she said, what is this scene? So I explained the scene to her. She said, tell me what I should do. I said, I'm not telling you what you should do. You know, you've got the lines, this is the place, this is the situation in the And film. it was a very difficult scene. It was that a very day. difficult scene because we started with a very difficult scene, a very first scene in the film. And of course, it worked out brilliantly. You know, it didn't take long. And then immediately I knew that there was nothing that would go wrong as far as the performance was concerned till the end of the film. And nothing actually went wrong except the deodorant in the eye. कई बहुत अच्छे सीन्स हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।